श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणम् षष्ठः स्कन्धः अथैकविंशोऽध्यायः। आखेट के लिए वन में गए राजा से एकावली की सखी यशोवती की भेंट, एकावली के जन्म की कथा। व्यास उवाच जातकर्मादिसंस्कारांश्चकार नृपतिस्तदा दिने दिने जगामाशु वृद्धिं बालासुलालितः। नृपा संसारजं प्राप्य सुखं पुत्रसमुद्भवं ऋणत्रयविमोक्षं च मेने तेन महात्मना। षष्ठेऽन्नप्राशनं तस्य कृत्वा मासि यथाविधि तृतीयेऽथ तथा वर्षे चूडाकरणमुत्तमं। चकार ब्राह्मणान् द्रव्यैः सम्पूज्य विविधैर्धनैः गोभिश्च विविधैर्दानैर्याचका नितरानपि। वर्षे चैकादशे तस्य मौञ्जीबन्धनकर्म वै कारयित्वा धनुर्वेद मध्यापयत पार्थिवः। अधीतवेदं पुत्रं तं राजधर्मविशारदं दृष्ट्वा तस्याभिषेकाय मतिं चक्रे जनाधिपः। पुष्यार्कयोगसंयुक्ते दिवसे नृपसत्तमः कारयामास संभारान् अभिषेकार्थमादरात्। द्विजानाहूय वेदज्ञान् सर्वशास्त्रविचक्षणान् अभिषेकं चकारासौ विधिवत् स्वात्मजस्य। जलमानीय तीर्थेभ्यः सागरेभ्यश्च पार्थिवः स्वयं चकार विधिवत् अभिषेकं शुभे दिने। धनं दत्त्वाथ विप्रेभ्यो राज्यं पुत्रे निवेश्य सः जगाम वनमेवासो स्वर्गकामास भूपतिः। एकवीरं नृपं कृत्वा सम्मान्य सचिवानथ भार्यया सह भूपालः प्रविवेश वनं वसि। मैनाकशिखरे राजा कृत्वा तार्तीयमाश्रमं नित्यं पत्रफलाहारश्चिन्तयामास पार्वतीम्। एवं स नृपतिः कृत्वा दृष्टान्ते सह भार्यया मृतोऽसौ वासवं लोकं गतः पुण्येन कर्मणा। इन्द्रलोकं पिता प्राप्त इति श्रुत्वाथ हैहयः चकार वेदनिर्दिष्टं कर्म चैवोर्ध्वदैहिकं। कृत्वोत्तरा क्रिया सर्वा पितो पार्थिवनन्दनः। राज्यं चकार मेधावी पित्रा दत्तं सुसम्मतम्। एकवीरोऽथ धर्मज्ञः प्राप्य राज्यमनुत्तमं बुभुजे विविधान् भोगान् सचिवैश्च सुमानितः। एकस्मिन् दिवसे राजा मन्त्रिपुत्रैः समन्वितः जगाम जाह्नवीतीरे हयारूढा प्रतापवान्। सम्पश्यन् पादपान् रम्यान् कोकिलालापसंयुतान् पुष्पितान् फलसंयुक्तान् षट्पदालिविराजितान्। मुनीनामाश्रमान् दिव्यान् वेदध्वनिनिनादितान् होमधूमावृताकाशान् मृगसावसमावृतान्। केदाराञ्छालिसम्पक्वान् गोपिकाभिः सुरक्षितान् प्रफुल्लपङ्कजारामान् निकुञ्जाश्च मनोरमान्। प्रेक्षमाणा प्रियालास्तु चम्पकान् पनसद्रुमान् वकुलास्तिलकान् नीपान् मन्दाराश्च प्रफुल्लितान्। सालास्तालास्तमालाश्च जम्बूचूतकदम्बकान् सगच्छन् जाह्नवीतो ये प्रफुल्लं शतपत्रकं। पङ्कजं चातिगन्धाढ्यम् अपश्यत् अवनीपतिः। दक्षिणे जलजस्याथ पार्श्वे कमललोचनां कनकाभां सुकेशीं च कम्बुग्रीवां कृशोदरीं
बिम्बोष्ठीं सुन्दरीं किञ्चित् समुद्यत सुपयोधरां सुनासां चारु सर्वाङ्गीम् अपश्यत् कन्यकां नृपः रुदतीं तां सखीं त्यक्त्वा विह्वलां दुःखपीडितां साश्रुनेत्रां कृन्दमानां विजने कुररीमिव संवीक्ष्य राजा पप्रच्छ कन्यकां शोककारणं सुनसे ब्रूहि कासि त्वं कस्य पुत्री शुभानने गान्धर्वी देवकन्याथ कथं रोदिषि सुन्दरी कथम एकाकिनी बाले त्यक्ता केनपि कस्वरे पतिस्ते क्व गतः कान्ते पिता वा ब्रूहि साम्प्रतं किं ते दुःखमरालभ्यो कथयाद्य ममान्तिके करोमि दुःखनाशं ते सर्वथैव कृशोदरी न राज्ये मम तन्वङ्गी पीडां कोऽपि करोत्यलं न भयं चौरजं कान्ते न राक्षसभयं तथा महिषा सति भूपाले नोत्पाता दारुणा भुवि भयं न व्याघ्रसिंहेभ्यो न भयं कस्यचिद् भवेत् वदवामोरुकस्मात् त्वं विलापं जाह्नवीतटे करोषि त्राणहीनात्र किं ते दुःखं वदस्व मे हन्म्यहं दुःखमत्युग्रं प्राणिनां पृथिवीतले दैवं च मानुषं कान्ते व्रतम् एतन्ममाद्भुतं विशाललोचने ब्रूहि करोमि तव चिन्तितम् इत्युक्ते वचने राज्ञा श्रुत्वोवाच मृदुस्सना शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि मम शोकस्य कारणं विपत्तिरहिता प्राणी कथं रुदति भूपते प्रब्रवीमि महाबाहो यदर्थं रुदति त्वहं तव राज्यात् अन्यदेशे राजा परम अधार्मिकः रैभ्यो नाम महाराजा राजा परमधार्मिकः रैभ्यो नाम महाराजा सन्तानरहितो भृशं तस्य भार्या सुविख्याता रुक्मरेखेति नामतः सुरूपा चतुरा साध्वी सर्वलक्षणसंयुता अपुत्रा दुःखिता कान्ता मित्युवाच पुनः पुनः किं जीवितेन मे नाथ दिग्वृथा जीवितं मम बन्ध्याया सुखहीनाया हि पुत्राया धरातले इत्येवं भार्यया भूपः प्रेरितो मखमुत्तमं चकार ब्राह्मणास्तज्ञान् आहूय विधिवत्तदा पुत्रकामो धनं भूरि ददावथ यथोदितं हूयमाने घृतेत्यर्थं पावकादति सुप्रभात् आविर्बभूव चार्वङ्गे कन्यका शुभलक्षणा बिम्बोष्ठी सुदति शुभ्रो पूर्णचन्द्रनिभानना कनकाभासुके शान्ता रक्तपाणितला मृदुः सुरक्तनयना तन्वी रक्तपादतला भृशं हुतासनात् समुद्भूता होत्रा सा स्वीकृता तदा होता प्रोवाच राजानं गृहीत्वा तां सुमध्यमां राजन्पुत्रीं गृहाणेमां सर्वलक्षणसंयुताम् एकावलीव सम्भूता हूयमानाद्भुतासनात् नाम्ना चैकावली लोके ख्याता पुत्री भविष्यति सुखितो भव भूपाल पुत्र्या पुत्रसमानया सन्तोषं कुरु राजेन्द्र दत्ता देवेन विष्णुना होतुर्वाक्यं नृपा श्रुत्वा दृष्ट्वा तां कन्यकां शुभां जग्राह परमप्रीतो होत्रा दत्तां सुसम्मतां गृहीत्वा नृपतिस्तां तो ददौ पत्न्यै वराननाम् आभास्य रुक्मरेखायै गृहाण सुभगे सुतां सा तां कमलपत्राक्षीं प्राप्य कन्यां मनोरमां जहर्षमुदिता राज्ञी पुत्रं प्राप्य यथा सुखं चकार मङ्गलं कर्म जातकर्मादिकं शुभं
पुत्रजन्मसमुत्थं यत् तत्सर्वं विधिवत्ततः समाप्य च मखं राजा द्विजेभ्यो दक्षिणां शुभां दत्त्वा विसृज्य विप्रेन्द्रान् मुदं प्राप महीपतिः। दिने दिने सितापाङ्गे पुत्रवृद्ध्याभृशम्भवौ मुदं च परमां प्राप नृपभार्या सुतान्विता। उत्सवस्ताद्दिने तस्य प्रवृत्ता सुतजन्मजः पुत्री पुत्रसमाप्त्यर्थं बभूव वल्लभा किल। राज्ञो मन्त्रिसुता चाहं सुबुद्धे मन्मथा कृते यशोवती च मे नाम समानं वय आवयो। वयस्याहं कृता राज्ञा क्रीडनाय तया सह सदा सहचरी जाता प्रेमयुक्ता दिवानिशम्। एकावली गन्धवन्ती यत्र पद्मानि पश्यति तत्र सारमती बाला नान्यत्र सुखमाप्नुयात्। सुदूरे जाह्नवीतीरे भवन्ति कमलान्यपि रममाणा तत्र याता मत्समेता सखीयुता। मया निवेदितं राजन् पुत्री ते कमलाकरान् प्रेक्षमाणातिदूरे सा प्रयाते निर्जने वने। निषेधिताथ पित्रासौ गृहे कृत्वा जलाशयान् कमलान् वापयित्वाथ पुष्पितान् भ्रमरावृतान्। तथापि निर्ययौ बाला कमलासक्तचेतना तदा राज्ञा रक्षपाला प्रेरिता शस्त्रपाणयः। एवं रक्षायुता तन्वी मत्समेता सखीयुता क्रीडार्थं जाह्नवीतो ये नित्यमायाति याति च। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे राजपुत्र्या एकावल्या वर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। यशोवती का एक वीर से कालकेतु द्वारा एकावली के अपहृत होने की बात बताना। यशोवत्युवाच प्रातरुत्थाय तन्वंगे चलिता च सखीयुता चामरैर्विज्यमाना सा रक्षिता बहुरक्षिभिः। सायुधैश्चातिसन्नद्धैः सहिता वरवर्णिनी क्रीडार्थमत्र राजेन्द्र सम्प्राप्ता नलिनीं शुभाम्। अहमप्यनया सार्धं गङ्गातीरे समागता अप्सरोभिः समेता च कमलैः क्रीडमानया। एकावली तथा चाहं जाते क्रीडापरे यदा सहसैव तदा यातो दानवो बलसंयुतः कालकेतुरिति ख्यातो राक्षसैर्बहुभिर्युतः। परिघासे गदा चाप बाणतोमरपाणिभिः दृष्टा चैकावली तेन रूपयौवनशालिनी। द्वितीया कामपत्नी वा क्रीडमाना सुपङ्कजैः मयोक्तैकावली राजन् कोऽयं दैत्या समागतः गच्छावो रक्षपालानां मध्ये पङ्कजलोचने। विमृश्यैवं सखी चाहं त्वरयैव गते भयात् मध्ये वै सैनिकानां तौ सायुधानां नृपात्मजा। कालकेतुस्तुतां दृष्ट्वा मोहिनीं मदनातुरः गदां गुरुवीं गृहीत्वा तो धावमाना समागतः। रक्षकान् दूरता कृत्वा जग्राहाम्बुजलोचनां त्रस्तां बेपतु संयुक्तां क्रन्दमानां कृशोदरीं। त्यजैनां मां गृहाणेति मया चोक्तोऽपि दानवः न मां जग्राह कामार्तस्तां गृहीत्वा विनिसृतः। तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो रक्षकास्तं महाबलं प्रतिषिध्य तु संग्रामं चक्रुर्विस्मयकारकं। तस्यापि राक्षसा क्रूरा सर्वथा शस्त्रपाणयः युधो रक्षकैः सार्धं स्वामिकार्ये कृतोद्यमा। संग्रामस्तु तदा जाता कालकेतोस्तथा रणे निहत्य रक्षकान् सर्वान् गृहीत्वैनां महाबलः युक्तो राक्षससैन्येन निर्जगामपुरं प्रति। वीक्ष्यतां रुदतीं बालां गृहीतां दानवेन तु पृष्ठतोऽहं गता तत्र यत्र नीता सखी मम। विक्रोशन्तीं यथा सा मां पश्येदिति पदानुगा सापि मामागतां वीक्ष्य किञ्चित् स्वस्थाभवत्तदा। गताहं तत्समीपे तो तामाभास्य पुनः पुनः सा मां प्राप्याति दुःखार्ता
स्तम्भस्वेदसमाकुला कंठे गृहीत्वा मां भूपारुरोध भृशदुःखिता स मामाह कालकेतु प्रीतिपूर्वमिदं वचः समाश्वासय भीतां त्वं सखीं चञ्चललोचनाम्। प्राप्तं ममाद्य नगरं देवलोकसमं प्रिये दासोऽस्मि तव रत्या हि कस्मात् क्रन्दसि कातरा कथयैनां सखीं तेद्य स्वस्था भव सुलोचने। इत्युक्ता मां सखी पार्श्वे समारोप्य रथोत्तमे जगाम तरसा दुष्टा पुरे स्वस्य मनोहरे सैन्येन महता युक्ता प्रफुल्लवदनाम्बुजा एकावलीं तथा मां च संस्थाप्य धवले गृहे राक्षसान् गृहरक्षार्थं कल्पयामास कोटिशः। द्वितीये दिवसे सोऽथ मामुवाच रहो नृप प्रबोधय सखीं बालां शोचन्तीं विरहातुरां पत्नी मे भव शुश्रोणे सुखं भुङ्क्ष यथेप्सितं राज्यं त्वदीयं चन्द्रांशे सेवकोऽहं सदा तव। पुनरुक्तं मया वाक्यं श्रुत्वा तद्भासितं खरं नाहं क्षमा प्रियं वक्तुं त्वमेनां कथय प्रभो। इत्युक्ते वचने दुष्टो मदनक्षतमानसः उवाच विनयादेनां सखीं क्षामोदरीं प्रियां कृशोदरि त्वया मन्त्रो निक्षिप्तोऽस्ति ममोपरि तेन मे हृदयं कान्ते हृतं ते वसतां जिगतं तेनाहं तव दासोऽद्य कृतोऽस्मीति विनिश्चयः। भज मां कामबाणेन पीडितं विवशं भृशं यौवनं यातिरम्भोरु चञ्चलं दुर्लभं तदा सफलं कुरु कल्याणी पतिं मां परिरभ्य च। एकावल्युवाच पित्राहं कल्पिता पूर्वं दातुं राजसुताय वै हैहयस्तु महाभाग स मया मनसाभृतः। कथमन्यं भजे कान्तं त्यक्त्वा धर्मं सनातनं कन्याधर्मं विहायाद्य वेत्स्य शास्त्रविनिश्चयं यस्मै दद्यात् पिता कामं कन्या तं पतिमाप्नुयात् परतन्त्रा सदा कन्या न स्वातन्त्र्यं कदाचन। इत्युक्तोऽपि तया पापी विरराम न मोहितः न मुमोच विशालाक्षीं मां च पार्श्वस्थितां तथा पातालविपरीतस्य पुरं परमसङ्कटे राक्षसैरक्षितं दुर्गं मण्डितं परिखाभृतं तत्र तिष्ठति दुःखार्ता सखी मे प्राणवल्लभा तेनाहं विरहेणात्र रराटीमि सुदुःखिता। एकवीर उवाच कथं त्वमत्र सम्प्राप्ता पुरा तस्य दुरात्मनः विस्मयो मे महानत्र तत्त्वं ब्रूहि वरानने त्वया च कथितं वाक्यं संदिग्धं भाति भामिनी हैहयार्थे कल्पिता सा पित्रेति मम साम्प्रतं हैहयो नाम राजाहं नान्योऽस्ति पृथिवीपतिः मदर्थे कथिता सा किं सखे तव सुलोचना एतन्मे संशयं शुभ्रो छेत्तुमर्हसि भामिनी अहं तामानयिष्यामि तं हत्वा राक्षसाधमं स्थानं दर्शय मे तस्य यदि जानासि सुब्रते राज्ञे निवेदितं किं वा तत्पित्रे चाति दुःखिता यस्यैषा वल्लभा पुत्री न किं जानाति तामृतां नोद्यमा किं कृतस्तेन ततो मोचन हेतवे वन्दीकृतां सुतां ज्ञात्वा कथं तिष्ठति सुस्थिरः असमर्थो नृपा किं वा कारणं ब्रूहि सत्वरं त्वया मे परितं चेतो गुणान् उक्त्वा मुख्यमानुषं सख्या पंकजपत्राक्षे कृता कामवशो भृशं कदा पश्यामि तां कान्तां मोचयित्वातिसङ्कटात् इति मे हृदयं चाद्य करोत्यति मनोरथं ब्रूहि मे गमनोपायं पुरे तस्यातिदुर्गमे कथं त्वमागतास्तस्मात् सङ्कटात् अत्र तद्वद। यशोवत्युवाच बालभावान्मया मन्त्रो भगवत्याभिशाम्पते प्राप्तोऽस्ति ब्राह्मणाः सिद्धाः सबीज ध्यानपूर्वकः तत्रावस्थितया राजन्मया चित्ते विचारितम् आराधयामि सततं चण्डिकां चण्डविक्रमां सा देवी सेविता कामं बन्धमोक्षं करिष्यति भक्तानुकम्पिनी शक्ति समर्था सर्वसाधने या विश्वं सृजते शक्त्या पालयत्येव सा पुनः कल्पान्ते संहरत्येव निराकारा निराश्रया
इति संचिन्त्य मनसा देवीं विश्वेश्वरीं शिवां ध्यात्वा रक्तांबरां सौम्यां सुरक्तनयनां हृदि संस्मृत्य मनसा रूपं मन्त्रजाप्य पराभवम् उपासिता मया देवी मासमेकं समाधिना। स्वप्ने मम समायाता भक्तिभावेन तोषिता मामाहामृतया वाचा किं सुताप्सीति चण्डिका उत्तिष्ठ याहि तरसा गंगातीरं मनोहरम् आगमिष्यति तत्रासौ हैहयो नृपपुङ्गवः एकवीरो महाबाहो सर्वशत्रुविमर्दनः दत्तात्रेयेण मन्मन्त्रो महाविद्याभिधा परः दत्तोऽस्मै सोऽपि सततं मामुपास्तेति भक्तितः मय्या सक्तमतिर्नित्यं मम पूजापरायणः मामेव सर्वभूतेषु ध्यायन्नास्ति च मत्परः सते दुःखविनाशं वै करिष्यति महामतिः मासुतो विहरंस्तत्र तव त्राता भविष्यति हत्वा तं राक्षसं घोरं मोचयिष्यति मानिनीम् एकावलीमेकवीरा सर्वशास्त्रविशारदः पश्चात्सैवापति कार्यस्त्वया राजसुता शुभा इत्युक्तान्तर्दधे देवी प्रबुद्धाहं तदैव हि कथितं स्वप्नवृत्तान्तं देव्याश्चाराधनं तथा प्रसन्नवदना जाता श्रुत्वा सा कमलेक्षणा विशेषेण च सन्तुष्टा मामुवाच शुचिस्मिता गच्छ तत्र त्वरा युक्ता कुरु कार्यं मम प्रिये सत्यवाक्या भगवती सा वां मोक्षं विधास्यति इत्याज्ञप्ता तया चाहं सख्या वै प्रेमयुक्तया मत्वोपसरणं युक्तं तस्मात् स्थानात् तदा नृप चालिताहं तथा शीघ्रं महादेवी प्रसादतः मार्गज्ञानं शीघ्रगतिर्मया प्राप्ता नृपात्मजा इत्येतत्कथितं सर्वं कारणं मम दुःखजम् कस्त्वं कस्य सुतश्चेति वद वीर यथा तथा। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां षष्ठस्कन्धे हैहय एकवीराय यशोवत्यैकावलीमोचनाय देवी स्वप्नवर्णनं नाम द्वाविंशः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। भगवती के सिद्ध प्रदायक मंत्र से दीक्षित एक वीर द्वारा कालकेतु का वध, एक वीर और एकावली का विवाह तथा हैहय वंश की परंपरा। व्यास उवाच तस्यास्तो वचनं श्रुत्वा रमापुत्रा प्रतापवान् प्रफुल्लवदनाम्भोजस्तामुवाच विशाम्पते। राजोवाच रम्भोरूयस्त्वया पृष्टो वृत्तान्तो विशदाक्षरः हैहयोऽहं चैकवीर नाम्ना सिन्धुसुता सुतः मनो मे यत्त्वया नूनं परतन्त्रं कृतं किल किं करोमि को गच्छामि विरहेणातिपीडितः प्रथमं रूपमाख्यातं सर्वलोकातिगं त्वया तेन मे विह्वलं जातं कामबाणहतं मनः ततस्तस्या गुणा प्रोक्तास्तैस्तु चित्तं हृतं पुनः यत्त्वयोक्तं पुनर्वाक्यं तेन मे विस्मयोऽभवत् एकावल्या वचा प्रोक्तं दानवाग्रे मया वृतः हैहयस्तं विना नान्यं वृणोमीति विनिश्चयः तेन वाक्येन तन्वङ्गे भृत्योः मधुना कृतः त्वया तस्या सुखे शान्ते ब्रूहि किं करवाणि वाम्। स्थानं तस्य न जानामि राक्षसस्य दुरात्मनः गतिर्मे नास्ति गमने पुरे तस्मिन् सुलोचने वद मां त्वं विशालाक्षे तत्र प्रापयितुं क्षमा प्रापयासु सखीते सा यत्र तिष्ठति सुन्दरी हत्वा तं राक्षसं क्रूरं मोचयिष्यामि साम्प्रतं विवसां शोकसन्तप्तां राजपुत्रीं तव प्रियां विमुक्तदुःखां कृत्वासु प्रापयिष्यामि ते पुरं पित्रे चास्या प्रदास्यामि कन्यामेकावलीमहं पश्चाद्विवाहं कर्तासौ राजापुत्र्या परन्तप एवं ते मनसा कामो मम चापि प्रियं वदे भविष्यति स सम्पूर्णा साधनेन तवाधुना दर्शयासि पुरं तस्य पश्य मे त्वं पराक्रमं यथा हन्मि दुराचारं परदारापहारकं तथा कुरु प्रियं कर्तुं सक्तासि वरवर्णिने मार्गं दर्शय तस्याद्य पुरस्य दुर्गमस्य च। व्यास उवाच तन्निशम्य प्रियं वाक्यं मुदिता च यशोवती तमुवाच रमापुत्रं गमनोपायमादरात्
मंत्रं गृहाण राजेन्द्र भगवत्यास्तु सिद्धिदम् दर्शयिष्यामि तस्याद्य पुरं राक्षसपालितं सज्जो भव महाभाग गमनाय मया सह सैन्येन महता युक्तस्तत्र युद्धं भविष्यति कालकेतुर्महावीरो राक्षसैर्बलिभिर्भृतः तस्मान् मंत्रं गृहीत्वा त्वं व्रजिस्तत्र मया सह दर्शयिष्यामि ते मार्गं पुरस्यास्य दुरात्मनः हत्वा तं पापकर्माणं मोचयासु च मे सखीं श्रुत्वा तद्वचनं वीरो मंत्रं जग्राह सत्वरः दत्तात्रेयाद्दैवयोगात् प्राप्ताज्ञानिवराक्षुभात् योगेश्वरी महामंत्रं त्रिलोके तिलकाभिधं तेन सर्वज्ञता जाता सर्वान्तश्चरिता तथा तया स जगामासो पुरं तस्य सुदुर्गमं रक्षितं राक्षसैर्घोरैः पातालमिवपन्नगैः यशोवत्या च सैन्येन महता संयुतो नृपः तमायान्तं समालोक्य दूतास्तस्य भयातुरा क्रोशन्तोभिरुपार्श्वं कालकेतोस्तरस्विनः तमोचो सहसा मत्वा राक्षसं काममोहितं एकावली समीपस्थं कुर्वन्तं विनयान् बहून् दूता ऊचुः राजन् यशोवती नारी कामिन्या सहचारिणी आयाते स सैन्येन राजपुत्रेण संयुता जयन्तो वा महाराज कार्तिकेयोऽथवा नु किम् आगच्छति बलोन्मत्तो वाहने सहिता किल संयत्तो भव राजेन्द्र संग्रामा समुपस्थितः देवपुत्रेण युद्धस्व त्यजवा कमलेक्षणाम् इतो दूरेऽस्ति सैन्यं तद्योजनत्रयमात्रतः सज्जो भव महीपाल दुन्दुभिं घोषयासु वै व्यास उवाच तेषां तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसा क्रोधमूर्छितः राक्षसान् प्रेरयामास सायुधान् सबलान् बहून् गच्छध्वं राक्षसा सर्वे सम्मुखा शस्त्रपाणयः तानाज्ञाप्य कालकेतो पप्रच्छ प्रणयान्वितः एकावलिं समीपस्थां विवसां रसदुःखितां कोयमायाति तन्वंगी पिता ते वा परापुमान् तदर्थे सैन्यसंयुक्तो ब्रूहि सत्यं कृशोधरी पिता ते यदि संप्राप्तो नेतुं त्वां विरहातुरः ज्ञात्वा ते पितरं सम्यक् संग्रामं न करोम्यहम् आनयित्वा गृहे पूजां रत्नैर्वस्त्रैर्हयैः शुभैः करोमि तस्य चातिथ्यं गृहे प्राप्तस्य सर्वथा अन्यश्चेद्यदि संप्राप्तस्तं हन्मे निशितैः शरैः आनीता किल कालेन मरणाय महात्मना तस्माद्वद्विशालाक्षी कोयमायाति मन्दधि अज्ञात्वा मां दुराधर्षं कालरूपं महाबलम् एकावल्युवाच न जानेऽहं महाभागा कोयमायाति सत्वरः न मेऽस्ति विदिता कोऽपि स्थितायास्तव बन्धने नायं पिता मे न भ्राता कोऽप्यन्योऽस्ति महाबलः किमर्था मे चायाति नाहं वेद विनिश्चयम् दैत्य उवाच एवं वदन्त्यमे दूता वयस्याते यशोवते समानीय च तं वीरमागतेति कृतोद्यमा क्व गता सा सखी कान्ते विदग्धा कार्यनिश्चये नान्या कोऽपि ममारातिर्यो मे प्रतिबलो भवेत् व्यास उवाच एतस्मिन्नन्तरे दूता तत्रान्ये वै समागता तेहोचुस्तरिता भीता कालकेतुं गृहे स्थितं किं स्वस्थोऽसि महाराज समीपे सैन्यमागतं निर्गच्छ नगरात् तोरणं सैन्येन महतावृतः इति तेषां वचः श्रुत्वा कालकेतुर्महाबलः रथमारुह्य त्वरितो निरेयौ स्वपुरात् बहिः एकवीरोऽपि सहसा हयारूढा प्रतापवान् आगतस्तत्र कामिन्या विरहेण समाकुला युद्धं तयोरभूत्तत्र वृत्रवासवयोरिव शस्त्रास्त्रैः बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं वर्तमाने तदा युद्धे कातराणां भयावहे गदया ताडयामास दैत्यं सिन्धुसुतासुतः स गतासु पपातोर्व्यां वज्राहत इवाचलः पलायित्वा गता सर्वे राक्षसा भयपीडिता यशोवती ततो गत्वा वेगात् एकावलिं तदा उवाच मधुरां वाणीं विस्मितां मुदिता भृशम् एह्याले नृपपुत्रेण दानवोऽसौ निपातितः एकवीरेण धीरेण युद्धं कृत्वा सुदारुणं स्कन्धावारेऽप्यसौ राजा तिष्ठत्यद्य भ्रमश्रमातुरः दर्शनं काङ्क्षमाणस्ते श्रुतरूपगुणस्तव पश्यतं कुटिलापाङ्गे मनोभव समं नृपं कथिता
त्वं मया पूर्वं तस्याग्रे जाह्नवी तटे पूर्णानुरागा सञ्जातस्तेनासौ विरहातुरा वाञ्छति त्वां चारुरूपां द्रष्टुं नृपतिनन्दनः सा तस्य वचनं श्रुत्वा गमनाय मनो दधे लज्जमाना भृशंभीत्या कौमारं प्राप्तया तया कथं तस्य मुखं द्रक्ष्ये कुमारी यवसा भृशं समां गृह्णाति कामार्ता इति चिन्ताकुला सती यशोवत्यायुता तत्र नरयानस्थिता ययौ स्कन्धावारेति मलिनाम्बरधारिणी तामागतां विशालाक्षीं दृष्ट्वा राजसुतो ब्रवीत् दर्शनं देहि तन्वङ्गे तृषिते नयने मम। कामातुरं च तं वीक्ष्य तां च लज्जाभराभृतां नीतिज्ञाशिष्टमार्गज्ञा तमुवाच यशोवती राजपुत्रपिताप्यस्यास्त्वामेनां दातुमिच्छति एषापि त्वद्वशा नूनं भविता सङ्गमस्तव कालं प्रतीक्ष्य राजेन्द्र नयैनां पितुरन्तिकं स विवाहविधिं कृत्वा दास्यतीति विनिश्चयः स तस्या वचनं तथ्यं मत्वा सैन्यसमन्वितः समेता कामिनीभ्यां तो ययौ तत्पितुराश्रमं राजपुत्रीं तथा यातां श्रुत्वा प्रेम समन्वितः प्रेयौ सम्मुखस्तूर्णं सचिवै परिवेष्टितः बहुभिर्दिवसैर्दृष्टा पुत्री सा मलिनाम्बरा यशोवत्या तु वृत्तान्ता कथितो विस्तरात् पुनः एकवीरं मिलित्वासौ गृहमानीय चादरात् पुण्येन्नीकारयामास विवाहं विधिपूर्वकं पारिवर्रं ततो दत्त्वा सम्पूज्य विधिवत्तदा पुत्रीं विसर्जयामास यशोवत्या समन्विताम् एवं विवाहे संवृत्ते रमापुत्रो मुदान्वितः गृहं प्राप्य बहून् भोगान् बुभुजे प्रिया समं बभूव तस्यां पुत्रस्तु कृतवीर्याभिधा किल तत्सुताकार्तवीर्यस्तु वंशोऽयं कथितो मया। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां षष्ठस्कन्धे एकवीरैकावल्योर्विवाहवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।